able to recognize several life-threatening situations. जो हमसे पहले ने कहा कौन सी है लाइफ थ्रेटनिंग, जिंदगी को खतरा है, इस बंदे को खतरा है, इंसान को खतरा है, हम उससे आज रिकॉग्नाइज करने के काबिल हैं। ठीक है, एक तो हम ये करें, ठीक है, उसको हम रिवाइज करें कि हम इसको रिकॉग्नाइज करते भी हैं कि नहीं। तो एक तो हमने रिकॉग्नाइज करना है कि व्हाट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, वो सारी रिव्यू होगी। नंबर 2, हमने चेस्ट कंप्रेशन सीखनी है हाई क्वालिटी की, सीपीआर इसे कहते हैं, क्वालिटी सीपीआर में सीखनी है। वो सीख के जाएंगे आपको सर ने शुरू में बता दिया, डॉक्टर दर्शन ने कह रहे हैं कोई रिपीट भी करना पड़े, थोड़ा सा वो डराने वाला मैसेज था, लेकिन द पॉइंट इज कि इफ यू हैव टू रिपीट इट फॉर योर ओन गुड, फॉर ह्यूमैनिटी। इस कमरे को जरा देखिए, लुक एट दिस रूम एवरीवन, देखने को भाई, व्हाट इज द वेंटिलेशन सोर्स इन दिस रूम, तो बता सकते हैं? मैं जिनको जानता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं, उनको मैं नेचुरली टारगेट करता हूँ। हमजा प्लीज कैन यू टेल मी व्हाट इज द इनलेट एंड आउटलेट सोर्स ऑफ एयर? विंडोज एंड डोर्स की पहले बात करें, देखिए एयर आ रही है, एसी उस आई हुई एयर को अंदर ही रखेगा, सिंपल साइंस। सो ये क्या है कि बच्चे हैं, आप लोगों से इसके बाद मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। तो एडी का पता है किसी को क्या होता है? व्हाट इज एडी? ऑटोमेटिक एक्सीलरेटर। एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, बाहर से एक चीज है जो आप लगाएंगे और डिफिब्रिलेट करेंगे, हर एक को नहीं कर सकते, ये सीखना है। वी हैव ओनली वन इसलिए BLS बेसिक आइस को इन व्हिच वी विल डू CPR, जो हम पढ़ा चुके हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिसर्च, देन वी डू वेंटिलेशन, फिर हमें हवा की उसकी जो वेंटिलेशन है, एयर उसको भी मॉनिटर करना है, फिर हमें AED का यूज सीखना। और हमने इससे पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पर मेरे साथ समझ से कौन कर चुका है? सही कर चुका वैलिड है आपका BLS। Good material. Compressions भी ठीक हो गई और 2 वेंटिलेशन भी हो गई, एक्सीलेंट। नंबर 6 आ गए, आप वेंटिलेशन करें जरा मुझसे। हाँ, आप जब ग्रीन हो गए वेंटिलेशन करेंगे, आपके लंग्स सॉरी वेंटिलेशन आपके ये प्रैक्टिस करनी है इसकी वेंटिलेशन